करथिले सप्लायर टू ओके सो स्टैंडर्ड प्रोसेस रे आमे सप्लायर को परचेज ऑर्डर प्रोवाइड करथिले सप्लायर कोन करथिला मटेरियल प्रोवाइड करथिला हमकु एज वेल एज ता सहित गोटे इनवॉइस कॉपी भी प्रोवाइड करथिला जेमते हमें डिस्कशन करथिले जेमते फ्लिपकार्ट अमेज़न रे हमें जनरली परचेज करूचे से समय रे हमको मटेरियल भी आसुची एज वेल एज इनवॉइस भी आसुची सिमिलरली कंपनी मानकर भी सेम प्रोसेस एई थाए नथिंग डिफरेंट सो सेटा हमें ऑलरेडी कवर कर सारचे P2P प्रोसेस रे स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट रो साइकिल एबे हमें गोटे स्पेशल प्रोक्योरमेंट को जिबा दैट इज योर कंसाइनमेंट प्रोसेस ओके सो किछि स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस गुडा हम तुमको कहि दउची फर्स्ट इज कंसाइनमेंट पाइपलाइन process or procurement these are special procurement subcontracting stock transfer RTP means returnable transport packaging yes RTP process then blanket ठीक अछि सो एगुडा सब स्पेशल प्रोक्योरमेंट हमें देखिबा फर्स्ट हमें आज डिस्कशन करबा कंसाइनमेंट प्रोसेस तो कंसाइनमेंट प्रोसेस रे कोन हुए कि एक केस रे जे सप्लायर अछि सप्लायर को हमें परचेज ऑर्डर प्रोवाइड करिवा ओके परचेज ऑर्डर प्रोवाइड कला परे हेलो वॉइस ब्रेक होउची हां टिके सर वॉइस ब्रेक होउची ठीक अछि सर गोटे मिनिट चेक कर नबा इंटरनेट स्पीड सर मैं गोटे कथा पचारथिली सर जो P2P साइकिल जोटा सर हमरो सेटा P2P होची गोटे स्टैंडर्ड प्रोसेस राइट एगुडा सब स्पेशल प्रोक्योरमेंट हाँ स्पेशल प्रोक्योरमेंट माने देखो स्टैंडर्ड रो टिके डेविएट करूची अरे 100 एमबीपीएस अछि स्पीड कोन पई होसी मे भी सर मझिरे टिके ब्रेक थिला बे ठीक अछि एबे सुबुची सर करन प्रोसेस ओके फाइन स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट रे हमें कोन करथिले परचेज ऑर्डर प्रोवाइड करथिले सप्लायर हमको कोन करथिला मटेरियल जेतोले दउथिला मटेरियल मिलिला परे हमें कोन करथिले इनवॉइस भी ता सहित मिलुथिले हमें ताको पेमेंट करूथिले हां कि नहीं विद इन आवर स्टिपुलेटेड टाइम कि हमें 15 डेज भीतर पेमेंट करबा मटेरियल मिलबार या 30 डेज परे मटेरियल मिलबार पेमेंट करबा बट हमको पेमेंट करिवार थिला एसर नो आज्ञा बट कंसाइनमेंट प्रोसेस रे कोन हुए कि हमें परचेज ऑर्डर प्रोवाइड करबा सप्लायर कोन करिवो ओनली मटेरियल पठेइबो इनवॉइस पठेइबो नाही बिकॉज़ हमें ताको पेमेंट करबा नाही अपफ्रंट हमें पेमेंट करिवार नाही सेटा कोट रहिबो कंपनी प्रीमाइजेस भितरे रहिबो राइट जेतो बेले हमें ताको यूज करिवा देन ओनली हमें ताको पेमेंट करिवा केते पेमेंट करिवा जेति की यूज करिवा सेति की ही पेमेंट करिवा सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल सर को जो कोनते क्रेडिट नोट अकाउंट से जो कोनते क्रेडिट नोट डेबिट नोट हां
क्रेडिट नोट डेबिट नोट एक्चुअली कौन हुए सेटा मु कहबी आमे पर सेटा डिस्कशन करिबा जेतोल किछि रही जिवो कि सपोज हमर कैंसिल करूचे मानो कि से 10टा जिंस देइछि तादरो गोटे जिंस तार डैमेज पड़ी जाइछि राइट तो से समय क्रेडिट नोट जनरेट हो मैं ताको माने कोन से हमको रिटर्न करिवार अछि ओके तो आमे जितो बळे एग्जांपल गोटे नबा कि सपोज रॉ मटेरियल राइट सपोज गोटे आयरन इंडस्ट्री अछि ताकू दरकार कोन रॉ मटेरियल आयरन ओर ओके सप्लायर कोन करिवो कि कहबो तो मु तुमको 1000 मेट्रिक टन हमरो वेयर हाउस रे पकई दउ छी तुम जत्ते भी बेले यूज करिवो सेतर मते पेमेंट कर दबो ओके आगरो पेमेंट करिवा दरकार नाही ओके सो एथिरे एटा फायदा कोन थाए कंपनी रो कि कंपनी को अपफ्रंट पेमेंट करबा को पड़िबोनी कि तार जोरा अछि माने कैपिटल ताकू इन्वेस्ट भी करिवार नै कैपिटल ता पाखे रहइला राइट तो सेटा से आउ को जगह रे भी इन्वेस्ट करि परिबो सेकंड जिंस कोन अछि कि जेतो बळे मटेरियल दरकार डायरेक्ट यूज करिवो ताकू पुनी प्योरेज करबा को पड़िबोनी कि से प्रोसेस होबो टाइम लागिवो तो से सब जिंस भी नै जेतो बळे दरकार हला एट दैट मोमेंट से ताकू यूज कला बिकॉज़ सेटा तार प्रीमाइजेस भितरे ही रही छी ओके से स्टोर करके रखी छी एज ए स्पेशल स्टॉक ओके थर्ड जिंस कोन होउची कि एथिरे सप्लायर को भी बेनिफिट सप्लायर कोन बेनिफिट सप्लायर सपोज सर मेटेरियल प्रोड्यूस करूची या फिर जेतो बळे से माने जोड़ा खणिरो जेतो बाहर करूचंती रॉ मटेरियल को आयरन ओर को बाहर करचंती तो से समय रे ताकू तो स्टोरेज करिया पे तो जगह दरकार ना तो से माने कोन कले डायरेक्ट आनी करी कंपनी रे ही पुट कर देले कि कंपनी रे स्टोरेज रे रहिला राइट तो सिक्योरिटी रो भी तांकर किछि इश्यू नाही सप्लायर फ्री फ्रॉम स्टोरेज लोकेशन सिक्योरिटी ओके वर्षा रे धोई दिबार किछि नाही तो से सब जिंस प्रॉब्लम नाही एंड आउ गोटे एश्योरेंस सप्लायर को मिल जाउची कि मु जदी कंपनी रे एटा को डंप करि दउची तो से जगह जदी रखि दउची देन कंपनी ए मटेरियल को ही यूज करिवो ही करिवो राइट so it is a win-win situation for both company and supplier बुझी परला प्रोसेस ना डाउट सर जदी Again. गोटे जिंस जदी प्रोडक्ट ता गोटे प्रोडक्ट जदी एक्सपायरी डेट माने थाए ना गोटे जिंस रो जदी सेटा सेमति किछि हला देन हां से केस रे कोन रिटर्न होइता करि परिबो ना नै ए आमे डिस्कशन करूछे दिस इज द प्रोसेस ओके एसएपी रो प्रोसेस एमती अछि सो बैक एंड रे कोन थाए सेमानकर म्यूचुअल एग्रीमेंट हेई थाए राइट कि सेते बहुत सारा पैरामीटर्स है जदी डैमेज ही जाउची तो आमे तार कोन स्टेप नबा जदी एक्सपायर ही जाउची आमे सेटा कोन करबा ओके जदी किछि अलगा बहुत सारा रियल टाइम रे बहुत सारा इश्यूज आसी थाए तो सेटा को सेमाने मिटिगेशन प्लान भी सेमाने बनै थांती या सेमानकर थिबो जदी कि नाही जदी हमर एक्सपायर हे जाउची देन से केस रे आमे तुमको रिटर्न कर दो जदी यूज न करू सेटा रिटर्न कर दो जदी सॉफ्टवेयर राजी थिबो देन ओनली सेमाने रिटर्न कर देबे अदरवाइज सेमाने कोन देखंती कि आमे ट्रैक रिकॉर्ड देखंती सबल पई कि कंजप्शन रो पैटर्न ता देखि थांती कि हमर केते कंजप्शन अछि सपोज मोर अति मंथली कंजप्शन या ईयरली कंजप्शन जदी सेमाने धरिबे कि हमर 1000 मेट्रिक टन यूज होबार अछि तो सेमाने 2000 मेट्रिक टन कोन पई निज पाके रखिबे बुझ परछ त कथा तो सब जिंस पैरामीटर देखिला पर ही सेमाने सेमानक सहित कोन एग्रीमेंट हेई थाए ओके कि कंसाइनमेंट प्रोसेस हमें करिबा हमें तुमको अपफ्रंट पेमेंट करिवनु जेतो बळे हमें यूज करिवु सेतो बळे हमें पेमेंट दो सो दैट सप्लायर भी देखिबो कि मु सेति की मटेरियल पठेइबी जेति सेमाने यूज करि कि मते तांकर कि गोटे मास कि 2 मास भीतर मते पेमेंट करि परछ कि मते अधिक प्रोड्यूस करि कि तांको पार पकई देबी दैट मींस सप्लायर रो कैपिटल रे सेठी इन्वेस्ट हे जाउची ना तो सेमाने निजर कैलकुलेशन करिके ही एडा डिसाइड करिथिले बट सेटा को सपोर्ट करबा पई से प्रोसेस को सपोर्ट करबा पई एसएपी तार प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूची कि कंसाइनमेंट प्रोसेस बुझ परलो यस सर Yes, तो sir. आमे जिबा कंसाइनमेंट प्रोसेस किछि पॉइंट्स ता मु एठी मेंशन करथिली कि कंसाइनमेंट प्रोसेस इन एसएपी एमएम
is a special procurement process where firm stores vendors material, yeah, suppliers material, in its premises. Okay, but supplier, yeah, but the firm, the company, do not own the product, on the you can say raw material, until it is consumed. जे पर्यंत सेटा कंज्यूम न हो जाइछि से पर्यंत से ताको ओन करूनी. दैट मीन्स ओनरशिप कहा पाखर अछि, सप्लायर पाखर ओनरशिप अछि. बुझ परलो, जेतबेले से यूज करूछि तो से समय रे ओनरशिप आछि फार्म रो, कंपनी रो ओनरशिप आछि. ओके, material is physically available in the warehouse रे physically available रहुछि. Ownership remains with the supply vendor or supplier. Payment is made only when you consume or use the material. No upfront payment during goods receipt. जेतबेले हमें goods receipt करबा से समय रे हमें ताकू पेमेंट करबा नाही. ओके, so helps improve cash flow, no blocking of capital. एटा का विषय करा होछि कि सप्लायर कंपनी रो फार्म. ओके, सो फार्म रो कोनोसी कैपिटल ब्लॉक हे के रहउनी, जेतिकी यूज करछि सेतिकी ही पेमेंट करूछि. राइट, सो आर किसी प्री रिक्विजिट अछि ये प्रोसेस करबा पई. प्री रिक्विजिट मींस व्हाट, किसी मैंडेटरी कस्टमाइजेशन हमको करबा पड़िबो या प्रोसेस करबा पई सेही पैरामीटर्स को नबा को पड़िबो, so that आमे प्रोसेस टा को कंप्लीट करबा. दैट इज प्री रिक्विजिट. कौन प्री रिक्विजिट? पॉइंट नंबर 1, create info record with tax code. टैक्स कोड ऑलरेडी हमें डिस्कशन कर सारछे. एंड नेट प्राइस, टैक्स कोड, नेट प्राइस एंड info category as consignment. हमें जितबेले इन्फो रेकॉर्ड बनाउचे हमें सितरो चारिटा वे रे इन्फो रेकॉर्ड बनै पारो. 4 टाइप्स ऑफ इन्फो रेकॉर्ड हमें बनै परिबा. ME11 तमे जितबेले करूचो एट दैट टाइम देखो इन्फो कैटेगरी कोन अछि, स्टैंडर्ड, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, पाइपलाइन एंड कंसाइनमेंट. ओके, सो हमें P2P प्रोसेस नॉर्मल हमें स्टैंडर्ड टाइप ऑलरेडी करिसे. सो एबे देखिबा कोन कंसाइनमेंट प्रोसेस. सो हमको जतो कंसाइनमेंट रो भी इन्फो रेकॉर्ड ता बनै को पड़िबो. दिस इज मैंडेटरी. ओके, दिस इज प्रीरिक्विजिट. सेकंड ऑप्शन कोन अछि, क्रिएट PO with item category as K for consignment. आइटम कैटेगरी कौन कहती PO बेले कि it represents the type of procurement, which type of procurement it is. Okay, this is as K as a consignment. Next, third point, maintain condition record for message output. यार माने कौन हला कि जेतबेले हमें नॉर्मल प्रोसेस करूचे ते से समय हमको इनवॉइस हमको ऑलरेडी प्रोवाइड होची, हां कि नहीं, से हिसाब रे हमें ताको पेमेंट कर दोचे. बट इन केस ऑफ
सबकॉन्ट्रैक्टिंग कंसाइनमेंट प्रोसेस एटा को आमे यूज करूचे एंड इनवॉइस आमे जनरेट करिकी शेयर करबा का सहित सप्लायर सहित तो जो शेयर करिवार जो प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मेसेज आउटपुट ओके बुझी पारलो ना एथरे डाउट अछि कार ना तो सब आमे जो क्लियर है। शेयर करिबा मु सेटा देखेबी तार फॉर्मेट केमिति आछि जेमति गोटे बिल फॉर्मेट जनरेट होय सेमति ही जनरेट हो ओके मेसेज आउटपुट रे जो मेसेज आउटपुट जनरेट करवा ता पई भी किसी कंडीशन रिकॉर्ड हमको मेंटेन करिवार अछि ओके थ्रू टी कोड NAC this is the T code NAC for PO that is ME21N info record that is your ME11 okay so these are the prerequisite एति काम को परिवार अछि ये प्रोसेस परिवा आगरु राइट देन हमें आसीबा प्रोसेस फ्लो केमति करबा स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हमर कोन अछि क्रिएट इन्फो रिकॉर्ड दिस इज फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्रिएट PO with item category as K consignment step 3 maintain condition record for output एटा तमरो स्टेप 3 रे करि परिबो अदरवाइज तमे एठी कोन करि परिबो गुड्स रिसीव करि परिबो गुड्स रिसीव MIGO राइट गुड्स रिसीव कला परे कोन करबो गुड्स इश्यू करबो हां कि नहीं दुईटा जिंस रे तमरो कोन हेबो एठी ओनरशिप आसीबो गोटे होची गुड्स इश्यू और ट्रांसफर टू ओन स्टॉक आइदर हम ताको कंज्यूम करिबा या फिर ट्रांसफर टू ओन स्टॉक निज स्टॉक को जदि ट्रांसफर कर दवा एटा हमर को स्टॉक रे अछि स्पेशल स्टॉक ओके सो मु सेटा देखैबी जेतले गुड्स रिसीव करिबा से अलगा गोटे लाइन रे एटा स्पेशल स्टॉक आज स्पेशल स्टॉक एटा स्टोर हबो राइट जो सेटा हमें निज स्टोर को नहीं जिबा निज दैट मींस सेटा द्वारा ओनरशिप चेंज हे जिवो भले हमें ताको यूज करूने बट हमें ताको निज ओनरशिप चेंज कर नउचे दैट मींस निज स्टॉक को नहीं जाउचे सेठी ओनरशिप रहिबोनी सप्लायर रो ओके से केस रे भी हमें इनवॉइसिंग करबा को पड़िबो ताकू कोन कोआ जे सेटलमेंट MRKO settlement it's a type of invoicing ओके जोटा कि हमें कोथरे करिबा दैट इज MRKO राइट एंड तापरे स्टेप दिस वन मेंटेन कंडीशन रिकॉर्ड आउटपुट जोटा हमें इनवॉइस ता सेटलमेंट करिबा इनवॉइसिंग करिबा सेटा हमको कहा सहित शेयर करिबार अछि सप्लायर सहित ता पई आउटपुट हमें करिबा कोथरे टी कोड NAC ओके एथरा हमें कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करिबा कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन कला परे देन हमें आउटपुट करिबा मेसेज आउटपुट करिबा पई कोन टी कोड अछि ME MR91 ओके बुझ परलो it is the process just a second सो आर NAC रे के तुमको बुल्ली के आसीबा पड़ियो मु सो आउटा टी कोड कहूची दैट इज योर MRM1 एते डायरेक्ट तमे कॉल करियो MR एटा ही तमे मने रखो MRM1
ओके तो एटा हमें कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करिया मेसेज आउटपुट पाई सो आउटपुट करिया पाई कोन अछि टी कोड mr91 तो एटा होचे 6 स्टेप्स हमको फॉलो करियो पड़ियो ओके सो आ पाई हमको कोन दरकार फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल गोटे दरकार मटेरियल आउ कोन दरकार सप्लायर दरकार जे मटेरियल प्रोवाइड करिवो ओके तो कोन हमर मटेरियल अछि देखिनबा हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रे mm60 list of material plant rbp1 ए प्लांट रे कोन अछि देखिबा ए दुटा मटेरियल आछि click on this material and go to details this is a material number but हमें material number नहीं गले supplier supplier कोन टी कोड अछि लिस्ट ऑफ सप्लायर बाहर करबा पई mkvz परचेज ऑर्गेनाइजेशन पुट करो कौन सप्लायर अच्छी सो दिस इज ए सप्लायर तो सप्लायर नंबर कॉपी करना बा ओके तो हमको मटेरियल सप्लायर मिलेगा देन प्रोसेस फ्लो रे जीवा प्रोसेस फ्लो रे कौन अच्छी फर्स्ट कि हमें इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करबा इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट कर स्टेप 1 टेस्ट केस स्टेप 1 कौन क्रिएट इन्फो रिकॉर्ड ओके me11 so let's do this step 1 that is your me11 enter तो हमर सप्लायर के अछि वेंडर 30000 एंड 30000 जोटा कि हम ऑलरेडी मेंटेन कर एठी जोटा नहीं जीवा वेंडर पुट करो मटेरियल ये प्रोसेस हमें ऑलरेडी देखी छे राइट P2P प्रोसेस रे था परे भी हमें डिस्कशन करछे सो मटेरियल पुट करो एंड दिस टाइम info category as what consignment ओके तो ए जिंस एटा तुमको प्री रिक्विजिट consignment टाइप रो इन्फो होबा दरकार आ गोटे कथा हम कहि दउचे एठी मन रखता ओ जेतेबेले भी इन्फो रिकॉर्ड बनेबो तो हमर एठी कोन अछि इन्फो रिकॉर्ड रे कि टैक्स कोड हमको दबार अछि ओके गोटे टैक्स कोड प्रॉपर्ली आसीबा भले कोन दरकार ता पई टैक्स प्रोसीजर जन आसीबा दरकार ओके सो टैक्स प्रोसीजर हमर वर्तमान जेहेतुटा डेमो सर्वर सबल पई टैक्स प्रोसीजर समस्त चेंज करथांती ओके सो सेटा तो मु कहिछि कि ओबीबीजी रे जाई कि चेक करिवो कि हम कंट्री रे वर्तमान को टैक्स प्रोसीजर असाइन अछि कंट्री आईएन टैक्स जीबी एटा रहइबा दरकार काहे कि ना टैक्स जीबी अंडर रे टैक्स टाइप गुडा रहउची ओके जोटा हमें ऑलरेडी डिस्कशन करछे से क्लास ता तुम देखि नबो ओके टैक्स प्रोसीजर टैक्स जीबी अछि इट्स ओके देन कम बैक तो हमें इन्फो रिकॉर्ड बनाउतले सिलेक्ट ऑन कंसाइनमेंट एंड देन ओके सो एठी देखो इन्फो रिकॉर्ड को एटा मैंडेटरी कर जनरली एटा रुहेनी राइट ओनली इन्फो रिकॉर्ड नंबर आसे तो जदि एटी तुमको एमती मैंडेटरी किसी डिस्क्रिप्शन पई आसुथिबो सो एटी किसी भी पुट कर पारिबो ओके सपोज info for supplier 3030
Then go to purchase data. Purchase data रे हमर कौन put करिवार थिला? Net price. Suppose this is the optical mouse. So for this is the price maybe 300 rupees. Net price put कले and tax code. Tax code कौन अछि देखो drop down रे. एटा तमे already create करिवो निजरो. Class हमर सॉरी छी. तो हम एठी नै जिबा T5 input tax 5%. And से tax procedure जदि change हे जिवो ना, so एगुडा तमर आसीबनी, राइट? सेति पई फर्स्ट info record create करिबा आगरो tax procedure टा तमु चेक करिवार अछि. तो tax code एठी पुट करो. तो एठी हमर देखो तीनटा जिंस, गोटे होछि net price, गोटे होछि tax code, आ गोटे होछि consignment. Info type, it is the consignment type. Okay, got it? एथिरे डाउट कार अछि info record रे? ना सर. Okay, ना clear? सर. ठीक है. So put enter. So एटा तमर आसीबनी, एटा प्राइसिंग प्रोसीजर किछि गड़बड़ जे जदि भी आसीबो तमे PB00 नबो ग्रॉस प्राइस हैला. And then save. So info record created. Purchasing info record, this one RBPO, this is your purchase organization, and info type, it is the K for consignment of RBP1, a plant under created. Okay, बुझ परला एटा. Next एटा को मेंशन कर दबा. सर एटा जो हम सब करू एटा कोन एंड यूजर काम जो जिंस गुडा अछि. हाँ, ये जोटा अछि सेटा एंड यूजर एक्टिविटी. बट ताकू करिवा पई का हेले जोटा मोर प्री रिक्विजिट कहिले ना, एटा होछि फंक्शनल कंसल्टेंट रो काम. बुझ परला? माने एटा होची कॉन्फ़िगरेशन. हाँ, ये जोटा मेंटेन आउटपुट कंडीशन रेकॉर्ड मेंटेन करिवा ना, एटा फंक्शनल कंसल्टेंट कर दबा. बट एटा ए दिटा किंतु प्री रिक्विजिट कहार माने एंड यूजर एक्टिविटी. ओके, एंड ओके. फंक्शनल रो कोन काम? कंसाइनमेंट के तमरो प्योर आसुची कि न आसुची. जदि हमें पे प्योर आइटम कैटेगरी सिलेक्ट न करिवा के कंसाइनमेंट न रखिबा से जगह रे लास्ट क्लास जोटा हमें पीओ क्लास रे हमें डिस्कशन आज्ञा करथिले, आज्ञा ओके नहीं? जैसे हम कंसाइनमेंट न आज्ञा रखिबा देन आज्ञा. एंड यूजर एठी कोन करबो? किछ कर परिबो कि? सिलेक्ट करूथिबो करिबा पई ड्रॉप डाउन को जाउथिबो, बट सर से किंतु जगह आमे ताको सेठी कंसाइनमेंट ए नथिबो. बट सर हमें प्रीवियस क्लास गुडा करे आइटम कैटेगरी मल्टीपल रखुतले ना स्टैंडर्ड रे. मल्टीपल किछ नहीं, नहीं स्टैंडर्ड रे सेटा ब्लैंक थिला. ओके, जेतो बेले तमे एठी जाउचो, जेतो बेले भी क्रिएट करूचो ME21N, आमे एठी किछि नउ ही नथिले. देखो आइटम कैटेगरी आमे किछि नउ ही नथिले, ब्लैंक ही रहउतला. देखो ड्रॉप डाउन में चेक कला परे स्टैंडर्ड कोन अछि? ब्लैंक अछि. एठी किछि अछि? लेटर नाही किछि. ओके, ना. बट एई ड्रॉप डाउन में कोन आसीबो सेटा काम होउची फंक्शनल कंसल्टेंट रो. ओके, एंड इन्फो रिकॉर्ड एगुडा केमती असाइन होबो, तार इन्फो रिकॉर्ड रो कोन नंबर एंड दिस एंड ऑल. ओके, तो से सब जिंस भी फंक्शनल कंसल्टेंट रो. ठीक अछि. सो आमे इट इज क्रिएटेड, एटा हमर कॉम्बिनेशन रहइबो इन्फो ओके. रिकॉर्ड. क्रिएट करे हमें तार कॉन्फ़िगरेशन देखिबा, राइट? ओके ठीक अछि. सो ए जगह तमर कोन अछि? तीनटा जिंस कंसाइनमेंट टाइप, टैक्स कोड एंड नेट प्राइस. सो टेक दिस स्क्रीनशॉट. मनीषा तमरो टाइम अछि तो आज टिके 15 मिनिट्स अधिक होई पारे. नेट प्राइस हमें पुट कले. This is the tax code and this is the type of consignment.
सो नेक्स्ट प्रोसेस कौन आसीबो एबे हमें पीओ को क्रिएट करबा पीओ क्रिएट कला बेला हम आइटम कैटेगरी कौन दबा से जगह रे वी हैव टू सिलेक्ट एज के फॉर के consignment के that is our step number 2 step 2 ME21M okay create PO तो एटा मैं मेंशन भी कर दउची create PO with item category so let's move to create the PO तो हमें एठी कोन कले कोन नबा एठी आइटम कैटेगरी के नेबा एठी select supplier put करो supplier कोन अथिला हमर एठी this is a vendor or supplier material कोन अछि एटा हो हमर material put करो material here quantity केतरा दरकार suppose 100 quantity delivery date suppose 30th of May को plant रे RBP1 storage location 1000 okay so एतकी हमको put करिवार अछि then enter purchasing organization and organization structure एटा सब put करियो RBPO purchase group and company code okay तो एतकी put कला परे देखो एठी अछि कोन कि तमरे एठी condition tab नाही ओके कंडीशन टैब कोन पाई नाही कि मटेरियल प्राइस कैप्चर हुए कंडीशन टैब रे देखो जदी मो एठी आइटम कैटेगरी के को जदी हटै दउची डिलीट कर देली एंड देन पुट एंटर एठी देखो ग्रॉस प्राइस दबा पाई से कहूची नेट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 तो मुझे 300 पुट कर दबा एठी कंडीशन टैब आसिला ठीक नै दैट मींस ए मटेरियल हमें जेता बळे रिसीव करबा सो हमको एतिक अमाउंट दबा को पड़िबो 300 into 100 quantity total is 30,000 तो एतकी वैल्यू हमको दबा को पड़िबो बट जदी एटी में आइटम कैटेगरी एज के नउचे दैट मींस सिस्टम जानूची इट इज ए कंसाइनमेंट प्रोसेस एंड मटेरियल रिसीव कला बेले कोनोसी पेमेंट करा जीवो नाही सेति पई कोन होची कंडीशन टैब एटी हाइड हे जाउची ओके बुझि परला ओके देन as it is invoice tab रे देखो टैक्स कोड हमें देइचे से ऑटोमेटिक आसी गला जीआर बेस्ड एवडा आसी जीवो मटेरियल डिटेल्स क्वांटिटी ना एवडा देइचे से सब आसी जाउची एंड देन एटा हमें सेव करिया पूर्व कोन करबो चेक करिवो पीओ इज ओके और नॉट नो मैसेज इश्यूड दैट मींस इट इज ओके नाउ सेव so you is created at this number this one okay so take this screenshot other documents this is your consignment PO consignment PO कौन पे कहा जाए due to this item category then step number 3 कौन अछि हमरो goods receive करिबा MIGO okay
गुड्स रिसीव करवा कहा अगेंस्ट रे परचेज ऑर्डर अगेंस्ट रे सो परचेज ऑर्डर को कॉपी कर ले जाओ देन क्रिएट न्यू सेशन *o migo ओके एंटर इट सिलेक्ट करो गुड्स रिसीव करवा अगेंस्ट परचेज ऑर्डर पुट परचेज ऑर्डर नंबर एठी परचेज ऑर्डर नंबर पुट करी एंटर कला परे देखो व्हेयर टैब को जी व्हेयर टैब को गला पर कोन आसी 101 मोमेंट में केतबेले आसे 101 मोमेंट कि जेतबेले तुम गुड्स रिसीव करिवो अगेंस्ट परचेज ऑर्डर नंबर से समय 101 मोमेंट टाइप आसे ओके बट ए केस रे कोन अछि 101 प्लस के अछि के फॉर स्पेशल स्टॉक ओके गुड्स रिसीव फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक बुझला नॉर्मली हमें जेतबेले पीओ करी कि बनौछे तो से समय रे तमरो एटी के आसीबो नाही ओनली 101 आसीबो बट ए जगह रे 101 के आसी के फॉर स्पेशल स्टॉक ओके फॉर कंसाइनमेंट स्टॉक देन आइटम ओके क्वांटिटी चेक करो 100 क्वांटिटी चेक document is okay now post metal document is posted तो जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हैला दैट इज 00763 एडा को डिस्प्ले करवा चलो अगेन गो टू डिस्प्ले दिस इज द डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करो गो टू व्हेयर टैब ओके सो आर गोटे स्क्रीनशॉट ले जा एंड ये तो डिस्प्ले गला पर देखो एठी डॉक्यूमेंट इन्फो अछि डॉक्यूमेंट इन्फो रे अछि एफआई डॉक्यूमेंट्स जदि भी किछि तमर सेठी अकाउंट रे किछि चेंजेस आसीबो ना तो ए जगह आसी जीवो बट एठी कोन आछि नो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट फाउंड इन अकाउंटिंग एठी किछि अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हेई नाही ओके एटा मन रखिबो दिस इज योर नोट नो अकाउंटिंग एंट्रीज ड्यूरिंग goods received in consignment process okay so consignment process रे goods received समय रे कोनोसी accounting entries आसीबो ही नहीं this is the note नेक्स्ट स्टेप कोन अछि गुड्स रिसीव हे गला राइट एंड ग्रुप रिसीव हे गला परे हमें चला देखिबा स्टॉक ता हमर कोन अछि दिस इज योर मटेरियल नंबर गो टू स्टॉक ओवरव्यू कोन देखबा टी कोड कोन एमएमबी एटा हमर मटेरियल ए प्लांट रे एग्जीक्यूट करो सो देखो एबे कोन आछि 100 क्वांटिटी हमर रिसीव हे जाईछि बट एटा अछि कोउटी वेंडर कंसाइनमेंट रे ओके बट एटा ओनरशिप हमर नाही जो आरबीपी1 प्लांट अछि आरबीएस1 कंपनी एंटरप्राइज रे तार ओनरशिप रे नाही जदि तार ओनरशिप रे थांदा से डायरेक्ट 1000 स्टोर लोकेशन अंडर देखि था तो ताकोटे सब कैटेगरी करी रखा गला दैट इज योर वेंडर कंसाइनमेंट ओके बुझ परलो ओके ओके जदि तमे एटा को निजर रिसीव करिवो सपोज देखो goods received other 561 material एटा मु विदाउट प्योर गोटे करके तुमको देखौची क्वांटिटी सपोज 20 क्वांटिटी where RBP1 storage location 1000 item okay check
What is log it is coming? Rule for posting की 50 active incorrect incorrect. Okay. तो एटा तो सेटअप करिया पड़ियो. So that means एटा तमे देखो कि जदि हमें PO करिकि हमें आनिबा then डायरेक्ट गुड्स तमर एठी गुड्स शो करबो जदि हमें पेमेंट करू जे तमे पेमेंट करूनी आपको स्पेशल स्टॉक रे एटा अलग होते लाइन आइटम हे कि रहइबो. राइट. सो एतकीटा हे गला पर हमें गुड्स वर्तमान 100 क्वांटिटी रिसीव करनेले. नेक्स्ट स्टेप कोन अछि? यूज करिबा हां कि नहीं. सो एठी गोटे पॉइंट मु ऐड करूची कंज्यूम यूज और ट्रांसफर टू ओन स्टॉक. दिस इज स्टेप नंबर 4. सो हमें कंज्यूम कला परे कि ट्रांसफर ओन स्टॉक कला परे ओनरशिप चेंज हैला परे ही हमें सेटल करिबा ना. सो फास्ट हमें चला ट्रांसफर करिबा. ओके बिकॉज़ मु एठी कंज्यूम एथि पई करूनी बिकॉज़ कंज्यूम करिबा पई हेले कोन दरकार कॉस्ट सेंटर दरकार. कॉस्ट सेंटर शायद ए एंटरप्राइज रे हे नाही. सो बेटर होबा हमें निज ओनरशिप चेंज कर दबा निज स्टॉक को नै आसीबा. निज स्टॉक पाने पई कोन सेम टी कोड एमआईजीओ रे ट्रांसफर करिबा. कोड अछि गुड्स रिसीप्ट plus then MIGO enter. गुड्स रिसीप्ट एबे जीवा हमें ट्रांसफर पोस्टिंग कि जोटा स्पेशल स्टॉक रो अछि ताको ट्रांसफर करबा कोठी की निज स्टॉक को. ओके सो मेटल पुट कर दियो 6001 प्लांट. दिस इज also फ्रॉम को जगह रो डेस्टिनेशन को जगह को आसीबो. प्लांट हमर RBP1 स्टोरेज लोकेशन 1000 बट एटी होसी कंसाइनमेंट टाइप. देखो आर मूवमेंट टाइप कोन अछि 411K. रिसीव करथिला में कोथरे गुड रिसीव 101K हो कि नहीं 101K. मूवमेंट टाइप 101 plus K. तमे जो ट्रांसफर करिबा स्टेप नंबर 4 कंज्यूम और ट्रांसफर टू ओन स्टॉक. यदि हम एठी कंज्यूम करिबा मूवमेंट टाइप कोन आसीबो मूवमेंट टाइप कंज्यूम कले आसीबो 201K. जदि हमें ट्रांसफर करिबा ओन स्टॉक को नबा ताल सेठी कोन आसीबो 411 K. सब जगह तुम K रहिबो कोन पई इट रिप्रेजेंट्स it is a special stock. Okay it is a consignment stock. तो हमें अबे ओन स्टॉक करके देखिबा. ओन स्टॉक करबा पई कोन करले ट्रांसफर टू एटी ट्रांसफर टू ओन स्टॉक. ट्रांसफर टू ओन स्टॉक पे कोन करबा गुड ट्रांसफर पोस्टिंग करबा. राइट. तो एठी कंसाइनमेंट रो जो वेंडर अछि ना तार एठी नंबर पुट करबा that is 30000 30000 and quantity put करो. suppose हमें तो 12 क्वांटिटी मते ट्रांसफर करवार अछि आउट ऑफ 100. डेस्टिनेशन सेम मटेरियल एटा दबा दरकार नै सेटा ऑटोमेटिक आसीबो तो लोकेशन 1 एंटर. देखो ऑटोमेटिक एंटर कला परे ऑटोमेटिक सब कुछ अपडेट हे गला. राइट. then material एटा होछि quantity 12 quantity where देखो 411K. ओके
TPTP means transfer posting, consignment to own. Got it? एटार गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ. टोटल भी गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाऊ ट्रांसफर पोस्टिंग. that it will be तो easy होगा तुमसे. then item okay, check, document okay and post. error rule for posting key 50 and account this one set incorrectly for voice. तो देखो जेतो बड़े किसी एरर आसीबो सेटा को हमें केमिति एड्रेस करिबा. ओके तो सेटा मु तुमको कहूँ एटा मन रख. सपोज देखो जेतो बड़े भी गोटे आसीबो एठी एरर तार गोटे एठी कोन अछि डिटेल बटन अछि क्वेश्चन मार्क. सेटा सिलेक्ट एठी क्लिक करिवो. सपोज गोटे गोटे जगह रे एम्ति एरर आसीबो बट एठी क्वेश्चन मार्क नथिबो तो से केस रे कोन करिवो ओनली एटा को सिलेक्ट करो एंड देन देखो एठी बॉटम रो अछि लॉन्ग टेक्स्ट ता ऊपर क्लिक करो. से तुमको कहबो कि एक्चुअल एरर ता कोन होउची. समथिंग रूल्स फॉर योर पोस्टिंग की 50 एंड अकाउंट this one set incorrectly for this field. okay तार जे कोन सी एरर आसीबो तार गोटे मेसेज नंबर थाए. सो ए मेसेज नंबर को ही तमे नै की यूज करि परिबो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म रे आरो सॉल्यूशन फाइंड आउट करि परिबो. फिर भी से तुमको एठी भी डायग्नोसिस कर दोउची कि कोन प्रोसेस हेई थई पारे कोन एरर हेई थई पारे केमते एटा रिजॉल्व करा जाय परिबो. okay you can find the posting key financial guide define posting key. okay so तमे एठी मेसेज नंबर कॉपी करो डायरेक्ट तमे एठी गूगल भी पुट करि परिबो. एति के इन SAP मेसेज नंबर देखो SAP कम्युनिटी रो सेबडा आसी जाउसी. ओके ऑलरेडी जो मन कर सेंती प्रॉब्लम हेइथिबो ना तो तारो सॉल्यूशन से माने प्रोवाइड करथिबे. ओके फर्स्ट कम्युनिटी सिलेक्ट करो. रूल्स फॉर पोस्टिंग 15 अकाउंट की तार 15 हमर आसी 50 तार आसी 15. ओके इज सेट इनकरेक्टली दिस फील्ड. तो से जगह रे कोन करसंती प्लीज चेक फील्ड स्टेटस this one in posting key account field status variant T code OB41 to check field status opposite posting key 15 और T code SPRO paths दे दीचन एठी फाइनेंशियल अकाउंट. सो एटा ओडे तुम कोन था हेल्प करे कि तुम सेटा रिजॉल्व करबा पय. तो हमें OB41 रे भी चेक करबा. हम दरकार अछि otherwise we will stop here. तमरा 9टा बजलानी एटा सॉल्व करी कि एंड तमरो क्लास आई थिंक एटा हमें कंप्लीट करी पारिबानी बिकॉज़ हमें कंज्यूम करी हमर गोटे कोन अछि फर्स्ट हमें देखले ट्रांसफर करूचे देन आ गोटे प्रोसेस भी देखिबार अछि हमें कंज्यूम भी कले भी केमती पेमेंट करूचे राइट. देन हमर सेटलमेंट भी अछि ताको पेमेंट केमती प्रोवाइड करबा देन आउटपुट करबा. ओके सो आई थिंक हमें नेक्स्ट क्लास जदी एटा करबा इट विल बी बेटर सो दैट हम मोर रिजल्ट भी रिजल्व कर देथिबी. तो नेक्स्ट क्लास हमें एटा देखबा. ओके सर खाली गोटे जिंस सर टिके ये कर न थांतु टी स्टॉप करंतु टिके सर जो मु जानिया पे चाहूं कि सर जो हमर जो प्री रिक्विजिट आ जो प्रोसेस फ्लो जो अपन जो कहले कंसाइनमेंट रो एटा सर हमें सर एबे सर एंड टू एंड प्रोसेस करजु राइट. माने केमिति का कंसाइनमेंट हमें क्रिएट करबो जण एंड यूजर केमिति तार कंपनी रे एसएपी इंप्लीमेंट होला पर से करबो राइट सर. यस हेलो हां आस्टला हां सर हां वॉइस ये हां आज्ञा. ठीक अछि. तो सर तापरे सर एटा सर हमर ये सरीला परे माने एंड यूजर सरला परे तापरे सर हमें तार कॉन्फ़िगरेशन भी देखिबे कि नहीं इट्स ए टाइप ऑफ प्रोसेस. देखो हमें ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन करि सारछे.
ओके P2P प्रोसेस मु तुमको करि सरला परे प्रोसेस बुझे सरला परे तार ईच स्टेप्स आज्ञा तार सब गुडा कर मु कॉन्फ़िगरेशन जणै छी केमिति हमें पीओ बनौचे पीओ रो नंबर रेंजेस कोन आछे फील्ड सिलेक्शन कोन करूचे राइट यस आज्ञा इन्फो रेकॉर्ड केमिति बनौचे कोन टाइप ऑफ इन्फो रेकॉर्ड्स अछि तो से समय मु कहिथिले हमें कंसाइनमेंट टाइप इन्फो रेकॉर्ड टा हमें कंसाइनमेंट टाइप रे देखिबा दैट इज एंड यूजर एक्टिविटीज ओके 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 सो बुझिले ए बुझिले सब से ड्रॉप ऑलरेडी डाउन हमें में जो करि सारछे हाँ हाँ जेमति हम्म तमे ड्रॉप डाउन रू आइटम कैटेगरी के पाउचो so that is the part of function already हमें already सेटा कवर करि सारछे ओके सो इटी एटा होउची गोटे कोन स्पेशल प्रोक्योरमेंट ओके एमती के नाही कि सब कंपनी रे एमती ही हुए वो माने एटा यूज ओके करथांती को माने यूज करू न थांती ओके सो ओके माने जदि एसएपी केही जदि तारा प्लेटफॉर्म कंसाइनमेंट प्रोवाइड प्रोसेस करछ जदि हम माने सर केही जदि कंसाइनमेंट जदि करिवो ताले हम्म सेम इट इज हमें स्टैंडर्ड बेले जेमति कॉन्फ़िगरेशन करथले सेम करिकि ना ताको कंसाइनमेंट करिवो राइट हाँ तापई तुमको एई सब प्रीरिक्विजिट्स नबाक पड़ियो कि इन्फो रेकॉर्ड कंसाइनमेंट टाइप रो बनेबो इन्फो कैटेगरी आज के नबाक पड़ियो कंडीशन टाइप तुमको एठी मेंटेन करबा को पड़ियो ओके so these are the processes got it ओके 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 माने एठी हमें ओके ओके ठीक अछि सर so आम नेक्स्ट क्लास देखिबा कि ए चारटा स्टेप पुन नेक्स्ट क्लास देखिबा राइट ठीक अछि